शुरू कीजिए। स्टार्ट करें सर? हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑन द बिहाफ ऑफ डियर और हनुमान सर के बर्थडे के ऑस्पिशियस डे के ऊपर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम डियर इसमें एक लाइव क्लास सेलिब्रेट करने के लिए लाइव क्लास करेंगे। और उसके लिए नन अदर देन हमारे सबसे सीनियर होम्योपैथ इन लुधियाना, हमारे डायरेक्टर सर कॉलेज के, लॉर्ड मार्विन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के, हमारे साथ कैंसर के बारे में शेयर करेंगे कि हाउ, बिकॉज सर वर्क कर रहे हैं काफ़ी देर से इन कैंसर एंड किडनी पेशेंट इन टर्मिनल डिजीजेस, और सर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और सर ने ये आइडिया दिया कि मैं शेयर करना चाहता हूँ सो दैट द अपकमिंग जो होम्योपैथ्स हैं और जो इस पर वर्क करते हैं तो उसमें उनको हेल्प मिले। सो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर एंड होल टीम आई वेलकम यू ऑल। वेलकम नीलम मैम, कंटिन्यू विद दिस। माइक माइक नीलम मैम, माइक आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेयर हर रोज अपनी कैप में नए नए फेदर्स लगा रहा है। कल हमने डॉक्टर संजय सोलंकी का क्रॉनिक डिजीज पे लेक्चर अटेंड किया, बहुत अच्छा था। एंड उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल सबसे सीनियर डॉक्टर रविंदर कोचर जी को डेयर लेके आया है, हम लेके आए हैं ताकि उनकी जो इतनी वंडरफुल क्योर्स हैं हम उनको देख सकें। सो डेयर की तरफ से डॉक्टर कोचर जी का बहुत बहुत वेलकम। एंड थैंक यू मैडम, आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करती हैं। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट डेयर माय टीम and I welcome Dr. Ravinder Kochhar ji to present his cases on kidney failure and cancer and और पता नहीं बड़ी-बड़ी कौन सी बीमारियां। So over to Dr. Pramila now. Thank you ma'am. Welcome Kochhar sir. Thank you. जैसे सबको पता है कि कोचर सर तो मेरे गुरु भी हैं। एज ए फादर भी मुझे बहुत कुछ सर समझाते भी हैं, लाइफ को लेके भी और प्रैक्टिस को लेके भी। और जब भी सर से बात हुई है मेरी तो हर बार मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे पहले नहीं पता था, मैं फिर से फेल हो गई सर के सामने बैठ के ना। तो हमेशा सर के जो न्यू इन्वेंशन या नए टेक्निक जो सर की आती हैं और बीमारियों को डील करने के बाद जो सर का एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर करते हैं वो बहुत बेहतर है। आज हम कैंसर के ऊपर बात करेंगे। कैंसर नाम भी ऐसा है कि सुनने में भी डर लगता है, और जब हम कैंसर के पेशेंट को डील करते हैं और उसके कुछ दिन भी हम बढ़ा लेते हैं या उसकी लाइफ को हम कुछ टाइम देते हैं तो खुद भी एक सुकून सा मिलता है। तो सर के पास तो मैंने बहुत ही नंबर ऑफ केसेस इस पर देखे हैं, सर का एक्सपीरियंस भी इस पे काफ़ी वास्ट है। तो आज सर इसी पे बात करेंगे। और एक बार फिर से आज हमारा जो सेकेंड सेशन है हनेमैनियन डे पर, और डॉक्टर हनेमैन की बर्थडे के लिए सबको बहुत बहुत बधाई हो। वेलकम सर। थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर प्रमिला, फर्स्ट ऑफ ऑल हनीमैन के डे पर आप सबको हनीमैन की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें पर्टिकुलरली मैंने कोई केस के बारे में नहीं बताने की कोशिश करनी है। मेरा जो टारगेट ये था कि कैंसर के बारे में जितनी भी टाइप की कैंसर हैं उसके बारे में हमारी बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन सी मेडिसिन कौन कौन से पार्ट पर अफेक्टेड हैं। ये कॉमनली मेडिसिन जो है रेपर्टरी में, मटीरियल मेडिका में, जहाँ किसी भी एक्सपीरियंस पर अगर डॉक्टरों ने मेंशन की हैं तो उसके बेस पर हर डिफरेंट पार्ट्स पर मैंने मेडिसिन देखने की कोशिश की है और कौन सी मेडिसिन जो है उसको एज ए स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आज की जो मेडिसिन हमारी चल रही हैं जो हम कैंसर पर डिस्कस करेंगे उसमें ये पॉइंट नहीं है कि हम ये कैंसर को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो एक श्योर है, इसमें कोई शक नहीं है कि होम्योपैथी से अगर प्रॉपरली सिम्टम मिलते हैं तो कैंसर क्या है सभी कुछ ठीक होता है। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी बात आती है कि स्पेसिफिक पार्ट्स पर कैंसर जब होती है उस टाइम में हमारे पास एक स्पेसिफिक मेडिसिन नज़र नहीं आती है कि कौन सी मेडिसिन को दें।
तो हमने जितने भी टाइप की कैंसर हैं, ऑलमोस्ट 30 टाइप की कैंसर 30 ऑर्गन पर अफेक्टेड कर रही हैं, उन सब के और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पर कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। और मैंने देखा भी है कि एक रेयर मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे ही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनकी मिसेज को ग्लैंडुलर प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी में आपके पास कोई प्रॉब्लम ऐसी है। मैंने कहा कहाँ प्रॉब्लम, कैंसर कहाँ है? तो उन्होंने कहा ऐसे ग्लैंड इन्वॉल्व हुई हैं, इंटेस्टाइन के पास है, लिवर में, ब्रह्मण में है। तो वो डॉक्टर जो कहते हैं ये ग्लैंडुलर प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही कि हमारे पास एक मेडिसिन है जो स्पेसिफिकली आप ग्लैंडुलर प्रॉब्लम पर ही दे सकते हो। तो वो ह्यूमन मेडिसिन थी, तो मैंने उसको वैसे ही बता दिया। और दैट वाज नॉट बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन उस डॉक्टर ने वो मेडिसिन नोट की और वो अपने मिसेज को पीजीआई में वो देनी शुरू कर दी साथ साथ। तो हुआ क्या है कि जब 1-2 महीने बाद वो डॉक्टर मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा कि क्या हाल आपकी मिसेज के बारे में। तो कहते डॉक्टर साहब वो आपकी मेडिसिन देने के बाद में रिजल्ट क्लियर होना शुरू हो गया, जो कि रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे क्या होता है कि होम्योपैथी में जब हम मेडिसिन देते हैं तो कभी कभी कैंसर में केस जो रुके हुए होते हैं उनका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है, रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। तो इस ढंग से ये जितनी मेडिसिन हमने डिस्कस करनी है आज, या जो जो हम नोट करेंगे, ये सभी मेडिसिन वो मेडिसिन है जो पर्टिकुलर ऑर्गन पर अपना कुछ ना कुछ काम करती है। उनका मोड ऑफ स्फीयर जो है वहाँ पर काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने आज का ये चैप्टर जो है शुरू किया है। हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये जो पार्ट्स ले रहे हैं फ्रॉम हेड टू फुट चलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली पहला जो पार्ट है हमारा वो हेड एंड ब्रेन है, जिसके लिए नो डाउट आपने बहुत सी मेडिसिन देखी होंगी। ग्लूमा वर्ड जो है, जो और पर्टिकुलर वर्ड डिसीज जो यूज की जाती है कैंसर के लिए, वो तो टर्म है ही है। पर लेकिन हमारे पास जो होम्योपैथी की मेडिसिन है उसमें ऑरमेट, जिसमें पर्टिकुलरली एक एक दो सिम्टम मैंने साथ में मेंशन किए हुए हैं, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। वायलेंट पेन इन हेड, वर्स ड्यूरिंग नाइट, वर्टाइगो, कंजेशन इन द हेड। उसी ढंग से सेकंड मेडिसिन जो है सिम्फाइटम है, स्पेशली पेन कम्स डाउन बोन ऑफ द नोज, inflammation of the inferior maxillary bone, hard red swelling. This is a particular point when the part is hard and there is swelling is also there. మన బెడ్లో మన మీ ముందు రాసాం కదా చెప్పండి. So coming to the next medicine, carboanimalus. These are the rare medicine generally not used by the doctors. Rush of blood with confusion, headache as if skull had been split or blown to pieces. Must press it with both the hands. Then common medicine, conium, that is the cancer's death is there. Basically you might see this thing कि कोनियम जो है आगे भी बहुत सी डिसीज में बहुत से पार्ट्स में काम करेगी, क्योंकि बेसिकली कैंसर डेथिस जो वर्ड है वो प्रोन टू कैंसर है, इसलिए कोनियम मेडिसिन आगे काफ़ी जगह काम आएगी। सेंसेशन ऑफ फुलनेस, बस्टिंग इन ब्रेन ड्यूरिंग हेडेक, वन साइड नम एंड कोल्ड, phosphorus, heat comes up from the spine, chronic congestion of the head, neuralgic part must be kept warm, burning pain. Then auramionetron, that is a specific medicine, violent boring in the orbital bone, calcarea curve, spots and ulcer on cornea, sensitive to light with dilatation of the pupil. Then again conium. These are the basically we are discussing about the cancer of the eye, photophobia and excessive lacrimation without inflammation or from slightest abrasion
or ulceration in the eyes. Lycopodium. Eye half open during sleep. Hemiopia. See only one half of an object. Ulceration and redness of the lids. Phosphorus. Green hollow about the candlelight. Particularly when we see the light, there is center part of the light is the hollowness is there. Basically, that is a black part, which indicates as a hollow. Later appears red, photophobia, edema of the lids, and around eyes. Then sepia, eye red and sides. Styes are there. Muscular asthenopia, black spots in the field of the vision. Cilicia, perforating or sloughing ulcer of cornea. Swelling, lacrimal duct. Epithelioma. Condrago, the specific medicine, flat epithelioma of the lower eyelid. Lachesis. Sensation as if eyes were drawn together by cord which were tied in a knot at root of the nose. Cornea. Hypersal. Corneal ulcer, iritis with pus in the anterior chamber. Eyelids. Fugia is the specific medicine for the eyelid cancer, basically. Eyelid agglutinated at night, dry and scaly, lid heavy as lead. Lachesis. Extrinsic muscles too weak to maintain focus. Condrago. Flat epithelioma of the lower eyelid. Basically, condrago is the medicine for the epithelioma of the lids, but especially lower lids. Then medullaris, calcarea, spots and ulcer on the cornea. Sensitive to light with dilatation of pupil, lacrimal duct closed from exposure to cold. Lycopodium, eye half open during sleep. Hemiopia sees only one half of an object. Ulceration and redness of the lids. Sparks before the eyes in the dark. Day blindness as well as night blindness. Cilicia, perforating or swelling ulcer of cornea. Swelling of lacrimal duct. Eyes are tender to touch, worse when closed. Vision confused, later run together when reading. Lacrimal gland, carboanimalis. Pain down through right eyeballs. Sensation as if something lay above eyes, so that she could not look up, as if eyeball is lodged in the socket. Then the cancer of the nose, aurum mure, tingling, burning, and itching in the nose, redness and inflammation with itching followed by discrimination, red swelling with ulcerated nostrils. Arsenicum album, burning and itching, knotty swelling of the nose. Cancer of the face. Conium, some maxillary glands are swollen and hard. Carboanimalis, bluish cheeks and lips. Copper colored eruption. Basically, copper color is also comes under as a bluish. Lapis alba, opening in cheek as large as silver dollar. Tumor of lower lips with burning, stinging pain that makes jump off his feet. Face and lips. Cancer of the lips particularly, especially lower lip, antemure. Mouth filled with tenacious, transparent mucus, unable to speak for some minutes. Conium. Submaxillary gland swollen and hard, cancer of the lip from pressure of the pipe. Particularly, the European people those are smoking through pipes, then they put the pressure on the lower lips, so that cancer of the lips are there. Sweats as soon as one sleep or even when closing eyes. Cancer of the face and lip, aurum ars. Epithelioma of the face and lip. Ulcer and lips. Cracks lips, bluish.
Cancer of the lips, particularly condureco. Deep crack in the corner of mouth, which are painful, warty growth occupying edges. Conium, dryness and exfoliation of the lips, blister and ulcer on the lips, cancerous ulcer on the lip. Then hydrostasis can be applied locally. Basically, for hydrostasis, I will tell you later on that is a very good medicine for the to check the reoccurrence of the malignancy. Cancer of lip of smoker, particularly sepia, swelling and cracking of the lower lip. Then cancer of the mouth, particularly cancer submaxillary gland, carboanimalis, knotty induration of the in the tongue, salty and sour water run from the mouth, white cheeks while eating. Calicinotum, that is one of the specific medicine for the cancer of tongue. Cancer ulceration on the right side of the tongue, cancer ulcer on the tongue with induration edges. Tongue has peculiar dark ground. I have cured this particular case also with calicinotum, particularly when the patient having a specific diagnosis and on the center of the tongue there was a particularly round edges was there, ulceration is there, and then I prescribed this calicinotum. Conium, sore saliva, distortion on the tongue. Symperbium, induration and sore on the tongue. Radium bromide. No doubt radium bromide we are generally giving to remove the after effect of the radium rays, pricking sensation on an end of the tongue with metallic taste, breath seemed hot. Then malignant ulcer of the mouth, particularly symperbium, sclerum induration on the tongue, auremoor cancer warts on the tongue and genitalia, auremoor natum cancers on cephalic base, clotalis horridus, cancer on the tongue with hemorrhage. Then on the mouth, arsenicum album, that is the one of the specific medicine, sharp aching pain or successive pulling in the teeth and gum, chiefly at night, extending sometime to the cheek, to the ear, and to the temples, with swelling of the cheeks and insupportable pain, which impels to furious despair, or which are aggravated when one lies on the disease side and mitigated by the heat of the fire. Then cancer of the teeth, particularly. Hecla lava is one of the specific medicine for cancer of teeth. Right cuspid of upper jaw, very sensitive to slight pressure on crown. Swelling and indurated tumor as large as the pea under right alenagi. Toothache, especially of teeth, that are very sensitive to pressure with swelling about jaw. Antigrudum. Stitches in and about the teeth when inspiring cold air. Pain in the carious teeth with dull pricking, successive pulling and gnawing even in the head, renewed after every meal, increased by cold water and mitigated in the open air. Toothache in hollow teeth, pain extended to the head, grinding of teeth. Arsenicum album. Neuralgia of teeth, feel long and very sore. Worse after midnight, better warmth. Then throat, cancer of the throat, carboanimalis, raw feeling like hard worm, better eating, smoking of Asciatica indica leaves highly recommended. Then cancer of the stomach. In case of stomach, arsenicum is one of the specific medicine. Vomiting, sometimes very violent and principally after having drunk or eaten or at night,
toward the morning, vomiting of food and of drinks or of mucus, bilious or serous matter of a yellowish, greenish, brownish or blackish color, vomiting of sanguineous matter, sensation of cold or insupportable heat and burning in the precordial region and in the stomach. Pain in the stomach manifest themselves mostly after a meal or in the night. Bismuth, that is the specific medicine again. Vomiting with convulsive, gagging and pain. Water is vomited as soon as it reaches the stomach. Lactation after drinking. Vomits all fluids. Burning, feeling as of load. Will eat for several days, then vomits. Bilious vomiting after eating. Food presses like a load in one spot. Slow digestion with fetid belching, vomiting of brownish water. Then carbonic acid, fermentative dyspepsia with base, taste and breath, constant belching, nausea, vomiting, dark olive green, heat rise up esophagus, flatulent distension of stomach and abdomen. Then chalcedonium is another medicine. Prefers hot food and drinks. Nausea, vomiting, better, very hot water, pain through stomach to back and right shoulder blades, gastric pain, gnawing, scraping, better eating, edge of a plug in the stomach, eating leaves temporarily. Cadmium sulfur, burning and cutting pain, intense retching and gagging, intense nausea and vomiting, better black vomits. Okay. बस कर जाएगी चेंज कर दो Next please. Carboanimalase. All food distresses the stomach. Nausea from smoking with causes aversion to tobacco, weak digestion, flatulence, heartburn, retching, vomiting, high cough with stomach cancer, sensation of coldness around the stomach, better rubbing and pressure. Crotalis horridus. Cancer of stomach with vomiting of bloody, slimy mucus, black or coffee ground vomiting. Phosphorus. Throw up food by the mouthful. Vomiting water is thrown as soon as it gets warm in the stomach. Vomiting of bile, blood, coffee ground, burning in stomach, worse eating. When a malignant cancer character is at least probable and inoperable, tumor of stomach, bowel, or rectum. Hydrostasis should be tried persistently. There are several cases on record of the disappearance of the growth after administration of this remedy. Even if it does not affect the growth, it nearly always influences the cachexia by Rodix. Here mentioned by the Rodix. So cancer of abdomen, both pylorus and cecum. Ornithogalum, distension of stomach and abdomen with frequent belching of mouthful of offensive flatus. Condurago, terrible pain when bowels are moved. Cancer of omentum. Novelia arenus, cancer of omentum, corkscrew-like pain in the abdomen. Cancer of intestine, hydrostasis. Colon cancer, loud rumbling with dull aching, worse moving, cutting, colicky pain, better after passing flatus. Almina, left side abdominal complaints, pressing in both groin towards sexual organs. Cancer of the intestine continue. Arsenicum album, gnawing, burning pain like coal of fire relieved by heat. Violent pain in abdomen with anguish. Has no rest anywhere, roll about on floor
and despair of life. Kalika, cutting pain as if intestines were torn. Sensation of a lump rising from the abdomen to throat and back again on coughing. Cancer of intestine, nitric acid. Colic relieved from tightening clothes, edge of a dry, hot cloth on. Carcinosis. Cancer of the liver, particularly carcinosin, enlarged, weak liver, constrictive pain, bending, amyloids. Chlorotum hydratum. Loss of appetite, nausea, and oppression in the stomach, without inclination to vomit, relieved by eating. Hydrostasis. Torpor of the liver with pale, scanty stool, liver atrophied, jaundices with catra of stomach and duodenum. Chelidonium. Stitches in the liver and spleen. Shooting stitches through liver to back. Crampy pain, inner angle of scapula. Natrem cell. Stitching in the region of the liver while walking in the open air, throwing tension and lancinating in hepatic region. Myristica cerifera. Dull pain in the region of liver, fullness, drowsiness, debility, mushy clay-colored stool, jaundices. Hydrostasis. During stool, smarting, burning, pain in the rectum. After stool, burning and smarting in rectum, long-lasting pain in the rectum, hemorrhage and fainting, exhaustion. All these are basically cancer of the rectum. Particularly hydrostasis is a good medicine. No doubt, Ruta is the best medicine for cancer of rectum, has marked action on the rectum, and should be remembered in inoperable cancer of the region. Dr. Rodick mentioned this thing. Alumen, cancer of the rectum without obstinate constipation. With obstinate constipation. Nitric acid, that is also one of the specific medicine for the rectum cancer. Before stool, Kolki cutting, constant pressing in rectum, constant but fruitless desire. During stool, nausea, tenesmus, spasm of anus, cutting in the anus and rectum, acute pain in the abdomen, sensation as if feces remained and could not be expelled, splinter-like pain in rectum with ineffectual urging, burning, tearing, palpitation of heart. After stool, continued urging, exhaustion, irritation, anxiety, general uneasiness, anus sore, raw, cutting, straining, shooting in rectum, continuing for hours, prolapse with sensation of constriction in anus, stitchy pain, hemorrhage, discharge of prostatic fluid. Urinary organ, urinary bladder, conium, interrupted urination, urine stop and starts better standing, cutting and burning after urination. Totalis horridus, particularly when the blood is coming with in the cancer. Hematuria, suppression and painful retention of urine. Urine scanty, dark and red with blood. Cancer of the testis. Spongia, testis hard and swollen. Swelling of spermatic cord and testicles with pain and tenderness. Onium, testes are hard and enlarged. Ill effect of suppressed sexual desire. Carbolic acid, itching or burning itching of scrotum. Emulated scratching, but it soon returns. Dr. R.V. Das. On genitalia, cancer on the penis. Conium, cutting in urethra while semen passes, itching in the prepuce. Arsenicum, itching, shooting, and burning in the glands and prepuce, glands swollen, cracked, and bluish. Clematis, testes hang very heavy and retracted. Testicles indurated with bruised feeling, swelling of the right half of the scrotum. Prostate, prostatic cancer, painful, particularly crotalis. Conium, easy emission of semen, even without firm erection. Flow of prostatic fluid during evacuation and after any mental
emotion. Cadmium fast, hardness and irritate of the prostate gland. I am using this medicine now in these days on particularly cancer of prostate. Particularly one patient is there and now he's feeling much better. Cadmium fast particularly. Calcarea flow, gland enlarges and becomes stony hard. Cancer of stomach particularly, carboanimalus, screenum of scrotum, fuligoanalis, chimney sweepers cancer. Particularly because when they are going in the chimneys, working in the chimneys, their testicles are touching to the hot part of the chimneys and they are becoming victim of that disease. So fuligoanalis is a very good medicine for that. Conium, testicle hard and enlarged, ill effect of suppressed sexual desire. Arsenicum album, ulcer with burning and stitching, scrotum edematous, erysipelas, inflammation of the scrotum, crotalis, cancer with hematuria and pain. Prostate, calcarea, cadmium fluoratum, pain in the and with pulsating mass, cyclamen, stitching and pressure in the prostate, urging to stool and urination. In case of female genitalias, high-tastus has been so told and undoubtedly useful when cancer involved with gland or uterus. Use it both internally and externally. Dr. Rudix. Use virulinum excessively in uterine hemorrhage due to fibroid or cancer of the uterus. Dr. Burnett and Dr. Ghosh, they have mentioned this thing. Quiotum 200, annihilative of the terrible order that accompanying cancer of cervix. I have a case now in these days and giving quiotum to her. Aurum major natrum, Dr. Burnett states that aurum major natrum have more power over uterine tumor than any other remedies. Aurum major natrum has induration of one part, softening of the another part, fibroid of the uterus. Cancer of cervix, conium, cervicitis, induration of os or cervix, ill effect of suppressed sexual desire or suppressed menses or from excessive endurance. Quijot, corrosive itching with vulva, burning and swelling of labia, violent itching, cancer indurated, and cancer disorder greatly debilitated with miserable feeling, cancer erosion of cervix, uterine cancer, excruciating, burning and offensive discharge, carboanimalus, indurated os with burning, uterine hemorrhage with disorder of glands. Ovary, cancer of ovary, conium, ovary enlarged and indurated with cutting pain, ill effect of wicked sexual desire or suppressed menses or from excessive indulgence. Lachesis, pain relieved by flow, ovarian tumor, left ovary, indurated, painful, must lift the cover. Quiote, apathy or inflammatory state of external parts, symptomatic of ovarian or uterine disease. Then cancer of the uterus, particularly conium, induration of os and cervix, cutting pain in ovaries and uterus, ill effect of repressed sexual desire or suppressed menses or from excessive indulgence. Almond, cancer of uterus with obstinate constipation. Hydrostasis, uterine hemorrhage, menorrhagia and metrorrhagia with fibroid tumors at menopause. Os uteri very tender. Quiote, after coition, pain, as of excoriation and hard knottiness in neck of uterus or swelling of the genital parts with burning pain, worse in morning than in evening. Cancer of uterus, particularly laxis is a good medicine. Uterus feels as if os is open. Uterine pain relieved by flow. Phosphorus, leukorrhea, profuse smarting, corrosive instead of menses. Slight hemorrhage,
from uterus between periods. Future, uterine polypus. Severe pain in left ovary and left inguinal region. Cauliflower experiences bleeding easily. Sepia, weak uterus, dragging or bearing down sensation as everything would escape through the vagina. Prolapsed bladder, uterus or vagina. Fulgi linguni. Protus vulva, uterine hemorrhage, cancer of womb with metrorrhagia, sadness, thought of suicide. Cancer of vagina, creosote, corrosive itching within vagina, burning and swelling of labia, violent itching between labia and thighs, cancer erosion of cervix, arsenic, pain as from red hot wire, worse least aggression, causes great pain, fatigue, better in warm room, cornea, itching around pudenda or deep in vagina. Cancer of labius vulva, arsenic of violent burning pain in genitals, inflammation and swelling of genitals, itching of genital organs, conium, shooting in labia, cramps in uterus with pinching or contracting or with digging above the vulva. Then cancer of larynx, arsenic of larynx sensitive to pressure, hoarse and day suffocative spell at night, crops, phytolacca, burning heat and throat as from coal of fire, as if red hot iron ball lodged in faucet, difficult swallowing with every attempt excoriating shooting pain through both ears. Cancer of breast, particularly Asterix rubrum, one of the specific medicine which is used by all the doctors, with nightly sharp pain, conium, with hard tumor after injury or bruises, stitches in breast and in nipples, piercing pain, buffo, pain aggravated at night, carboanimalis, painful nodosity and induration in the mammary, erysipelatous inflammation of the breast, chromium, stitchy pain from breast to axilla, cannot be a pressure. Very good medicine. I have used this medicine commonly in breast cancer. Lapis alba, burning, shooting, stinging pain in breast, phytolacca, heavy, stony heart, swollen or tender breast, pain during nursing, spreading all over the body, tumor of the breast with enlarged axillary gland, breast enlarged, and is hard, painful, and purple hue when child nurses, pain goes from nipple all over the body. Argentum niticum, nipple sore with from nursing. Screenum, same symptom is there. Cilicia, inflammation of the nipples, starting burning pain in the left nipple, sticking pain in the left breast, painful stitches behind left breast with chilliness all night, suppuration of the mammary, abscess in breast, also with fistulous ulcer, nipple ulcerated, induration in breast, right breast, hard, painful and swollen, nipple feeling as if gathering. Then contournigo, around nipple, severe swelling of inside from pigeon to hen egg, discharge ulceration with fitted, right side particularly. Carboanimalis, discharge ulceration with fitted. Then cancer of the lungs, arsenicum album, shortness of breath, must sit up, burst from odor, laughing, ascending, turning in bed or feeding eruption, better coffee or sweet water. Arania D, hemoptysis with hemorrhage of bright red color. This very medicine is very good medicine and use this medicine on the lung cancer. Then phosphorus, that is the good medicine for the bleeding. Tightness of chest, edge of flush of blood or upper part of chest across upper third of the lungs, as if lungs themselves were constricted, as if air were forcibly kept out with feeling of dryness, stitches in various parts of the chest, frequent through lungs,
especially on deep inspiration, on right side under false ribs, in left side beneath ribs, in left side on breathing. Calphia indica, lung cancer with a violent cough, which followed by bloody expectoration or of pure blood, bright red in the morning, dark or clotted in the evening, dullness of the chest on percussion, constant severe pain in chest, progressive emaciation with a sense of weight in the stomach with burning, flatulence with a spluttering diarrhea. Then extremities, cancer of bone, phosphorus, joint suddenly give way, stitchy in the elbow and shoulder joints, tearing left shoulder at night, pain in the tibia. Calcarea flow, bony growth, osteosarcoma, exostosis after injury, symphytum, after injury and bone fracture. Then conium, restlessness and heaviness in legs, rest spots and calves of the legs, sometimes painful, becoming subsequently green or yellow as after a blow or bruised and impending, and movement of the foot which is drawn back as if tendons were contracted. Heclalava, exostosis of tibia, severe continuous pain, incapacitating from work, tumor deforming face, forcing eyeball upward, obstructing nostrils, enlargement of maxillary bone, painful to touch. Then aurum mure, legs swollen and very tender along inside of the tibia, exostosis. Aurum iodatum, bone cancer with senile paresis. Cadmium mure, precancerous heaviness of the limbs, feet burning. Then cancer of the bone, vertical clavicle, sepia, aching in the inner scapular or lumbar region, paralytic wants to be pressed, icy coldness between the scapula. Cancer of the sternum, sulfur, shooting in the chest or sternum or extending to the back or into the left side, aggravated when coughing, lying on the back during least motion, when taking a full inspiration or when lifting the arms over the head. Acetic acid, skin cancer, particularly epithelial tissue cancer. Acanthasis, malignant lupus erythematosus. So that is the whole cancer, skin cancer. Hydrostasis, specific for cancer. Now, healthy history there, radium 30 occasionally we can give. After operation of the cancer, arsenicum, it is for the long period for non-recurrence. Carcinosin should be used when indicated by family history. That is, Fabrister mentioned this thing. Then, in general, arsenicum is always useful and necessary in cancer. It most as surely not when discriminately administered a certain amount of specific influence over the disease. I am using this medicine, arsenicum and hydrostasis low potency, to generally all patients, those are coming after operation or after the surgery, and they are just coming to me only just there will be no chance of recurrence of the cancer is there. So to avoid the recurrence, these two medicines are very good medicine. Arsenicum album in potency and hydrostasis in low potency, or you can give mother tincture also. We know of no medicine which has caused so great improvement in the general health of the patient as hydrostasis, an improvement which in most cases has become visible in a better expression of the continence of the patients. Dr. Marston and Lemnot, they have also mentioned this thing. The utility of arsenicum is often expressed by restoring and maintenance of the patient's general strength. Arsenicum album in low dilution of foliar solution, we have found the most remedial. Dr. Products and Ribbons. Condurago, relieve pain traceably to cancer. Patient sometimes claims
that any movement of thumb and finger on the affected side gives pain. Control angle leaves this particularly. So wherever the pain is there, so if by the least movement pain is aggravated, so we can think of control angle also. Magnesium fast can relieve the excruciating pain of the cancer. Then no doubt euphorbium is the specific medicine for the cancer pain as a palliative for burning pain of the cancer. I have to treat now who have had X-ray. I put one on to one of the radioactive salt as first measure to try to antidote the X-ray. Usually I use one of the radium salt, radium bromide and radium iodatum. If I can find any indication for iodine, I prefer radium iodatum. Dr. D.M. Borland, he has mentioned this thing. Cadmium use of this medicine convinced me in cancer. Dr. Grimmer, natrum crocodilisicum, foul breath and mouth with bad odor. If for carcinoma. Gallium aspirine, it has a powerful suspending modifying cancerous action. This is also good medicine. Ruta has a marked action on the rectum and should remember in the cases of lower bowel region, Dr. Rudix. And I have also used this medicine for lower part of the cancer. Ruta is a very good medicine. So thanks for patience listening. Basically, what I want to say to every doctors, please keep in mind, all these medicines are mentioned somewhere in the Materia Medica or in the repertories. But the thing is this, when we are having a case of particular part of the cancer, sometimes we are not getting the symptom and patient wants to think, you just give me the medicine. So in that condition, if we will go for a specific organ and then give that particular medicine, one thing is there, something is better than nothing. In that condition, पेशेंट को कोई ना कोई तो रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा और वो रिलीफ जो है that is good for the patient. And with this point, I am just using this for all the things, all the medicine I have got and selected from the different repertories. All medicine are from the Kent or from the Boric or from the different authorities. No doubt, I have used them in the 45 years. Now I can say some medicine I have used them and they are good medicine and they are having good response also. So this is my personal request to all the doctors that these all medicine, don't take it otherwise. These are the medicine when you are not getting any symptom of the patient and the patient is coming to you and wants something from you. So keeping in mind, we must give something to the patient, at least painless death to the patient, if we cannot cure them. So this is a basically idea that when the patient is coming at the fourth stage, last stage of the cancer, after operation or surgical or after moving the parts or chemotherapy or other things, so we can give something to him. I am using as cadmium, particularly that is good medicine to remove the chemo effects. And I have seen this thing that when the chemo is given there, 6 months to 1 year that will take after removal of the side effect of the chemo. But when we are giving the medicine, it will take only 3 months. So we can cut short the duration of the side effects of the chemo also. So there are so many medicines are there like that way, having a good response. So please keep in mind one thing, our today's lecture is only and only I am just giving you from the books with my experience also. I have added my experience. But again, I am telling you this thing, keep in mind, you can also find out all these medicines are mentioned somewhere in the books. Thank you very much. सर मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ Yes, इसमें please. जैसे सर everybody is reading Materia Medica, everybody is having a data which he can apply. From your experience, आपको इतने साल हो गए सर, how some जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं.
So what are the prerequisite कि हम एज ए स्टूडेंट, एज ए बिगिनर, जब हम कैंसर के लिए जाते हैं पेशेंट के लिए देखने, हमारे माइंड में क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? हाउ वी स्टार्ट विद द केस? कैसी छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक्स है, उसको लेके? यस प्लीज। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो सेम डिफिकल्टी विद मी आल्सो, और मैंने अपने आप को एक चीज सेट कर ली थी कि कैंसर के केसेस में आई हैव मेड द ग्रुप्स। सम केसेस वो हैं जो अनडायग्नोस्ड केसेस आते हैं, कुछ केसेस हैं जो डायग्नोस्ड केसेस आते हैं। ऐसे केसेस जो है अनडायग्नोस्ड हैं, उनको अगर हम ठीक कर भी देते हैं तो वी आर नॉट श्योर कि हमने कैंसर ठीक की है या नहीं की है, और पेशेंट को भी मालूम नहीं पड़ता कि मेरी कैंसर ठीक हुई है या नहीं हुई है। डायग्नोस्ड केसेस में पेशेंट हमारे पास आता नहीं है, जहाँ आते हैं तो दे हैव द फियर कि कैंसर ठीक होगी या नहीं होगी। सो इन दैट कंडीशन, so they are running to the allopath. Third point is this, they are coming to us after surgery or after chemotherapy or radiation, and that is the best time when we can give them the medicine. Now they have also time because allopath doctor ने उनको कह दिया है कि whatever we can do हमने कर दिया है। अब इसके बाद में इसको रीएक्नेस होगी या कैसे होगा, क्या ठीक होगा नहीं होगा, ये सब बातें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम है। और पेशेंट सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन के साथ आता है कि डॉक्टर साहब आप इसके लिए कुछ कर सकते हो कि मुझे दोबारा कैंसर ना हो। तो ये जो बातें हैं कि मुझे दोबारा ना हो, जहाँ मुझे वीकनेस ना हो, जहाँ सीवियरिटी ना आए, जहाँ मेरी डेथ जो है थोड़ी सी प्रलॉन्ग कर दो आप, तो इन बातों के लिए वी हैव ए गुड रिस्पॉन्स। तो होम्योपैथी में यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। No doubt, we are taking the history of the patient also, but prescribing the medicine, it is better. Here I am little bit prejudiced. Whenever the patient is coming with particular part of the cancer, I am selecting the first medicine for that part. Then I am thinking what is the general medicine for a patient. Then I am thinking the constitutional medicine for patient also, and keeping in mind, so how I will give these all medicines. So no doubt, I am giving first constitutional medicine to the patient, miasmatic medicine to the patient to boost up his vitality. But what is the drawback of that? Patient may not give you the time. So how long we will wait for that? So ultimately, after giving that dose, immediately we will give the supporting medicine, the specific medicine of that specific area. So with this way, the result will be better than the normal results, because we have covered the patient from both sides, in general and in the particular also. So patient feeling coming to us in the second, third, fourth day, डॉक्टर साहब कल से बेटर है, अब वो जनरलिटी जो है हमारी जो परेशानी ज़्यादा होती थी वो कम हो गई है, या जनरल सिम्टम कुछ रिलीफ हो गए हैं। तो इस ढंग से आप क्या है कि पेशेंट को कंटिन्यू करने के लिए आप एडवाइज कर सकते हो, और वो कंटिन्यू करेगा भी, बिकॉज ही गेटिंग रिलीफ। तो इसमें दो तरह के रिलीफ हैं, एक तो ये है कि पेशेंट की जनरलिटी का रिलीफ मिल रहा है, दूसरा पर्टिकुलर ऑर्गन को भी जो अफेक्टेड हुआ था वो भी रिलीफ मिल रहा है, और तीसरा जो अगर उसने कीमो जहाँ रेडिएशन जो करवाई हुई है या सर्जरी जो कराई हुई है उसके कारण जो उसको कोई कंप्लेंट आ रही है उनको भी फास्ट रिकवरी हो रही है। सो विद दिस वे होम्योपैथी बेटर देन इवन एलोपैथी। आई हैव सीन दिस थिंग कि वेयर द पीपल आर गेटिंग द ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल को एलोपैथी ड्रेसिंग भी करा रहे हैं, एंटीसेप्टिक भी यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, पर लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पर जैसे हम उनको एक होम्योपैथी मेडिसिन देते हैं, मियाजमेटिक मेडिसिन देते हैं, तो उसके बाद में वही मेडिसिन, उनकी मेडिसिन ही जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं। तो इस केस में जब इंग्लिश मेडिसिन काम करना शुरू कर देती है तो उसका मतलब है कि हमने वर्टिलिटी को तो रेज किया ही किया है, जिसके कारण उनका वो मेडिसिन भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया है जो आरडी यूज बाई द एलोपैथी। तो अगर एलोपैथी मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन एक्शन कर सकती है डायनेमिक डोज देने के बाद में, तो हमारी होम्योपैथी मेडिसिन क्यों नहीं करेगी? हमारी मदर टिंचर या लो प्रेंसी क्यों नहीं काम करेगी साथ में? तो हमारी सपोर्टिंग मेडिसिन जो है, हम साथ में जो मेडिसिन देते हैं वो भी काम कर सकती हैं। तो इस ढंग से आपको बताया कि जनरल में हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, जब कोई भी ब्लाइंडली कोई मेडिसिन देनी होती है तो आर्सेनिक और हाइड्रोक्साइड तो डॉक्टर रोडिक ने भी लिखा है और डॉक्टरों ने भी लिखा है, सभी ने एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि दे हैव एक्सपीरियंस।
और हमारे विशंबर दास जी जो है उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, दिल्ली के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, उनकी प्रैक्टिस की। और भी सीनियर डॉक्टर जो हमारे पुराने सीनियर होम्योपैथ हैं जिन्होंने प्रैक्टिस में वो अपनी प्रैक्टिस के बेस पर ही काम किया है, क्वालिफाइड भी नहीं थे, तो उन लोगों का भी जो मेंशन किया हुआ है, तो दे हैव सीन दिस थिंग कि आर्सेनिकम एल्बम और हाइड्रासिस अगर हम देते रहते हैं तो इस दोनों से हर एक पेशेंट की विटलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। Any other question? हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके लिए। हाँ जी बोलिए। सर एक तो क्वेश्चन है पोटेंसी और डोजेस, प्रदीप बागिल ने भी पूछा है और कुछ और भी हैं डॉक्टर जिन्होंने हाँ ये, डॉक्टर परवीन भी सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, ऐसे है इम्पोटेंसी के बारे में यहाँ तक कंसर्न है। मैं अभी भी बता रहा था ये बात, जो जैसे एक्सपीरियंस बेस पर जनरली क्या है कि हमारी जो स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, तो इन लोगों को हम जो मेडिसिन देते हैं, मॉडरेट सेफ पोटेंसी जो है वो 30 पोटेंसी है। तो 12, 6, 12 और 30 पोटेंसी जो है हमारी सेफ पोटेंसी हैं, जिनमें एटलीस्ट पेशेंट को किसी टाइप का भी कोई एग्रावेशन चांस ही नहीं होता है। और जनरली पेशेंट जब एडवांस स्टेज में आते हैं, 3rd 4th स्टेज के केसेस होते हैं, आफ्टर सर्जरी आते हैं, आफ्टर कीमो आते हैं, रेडिएशन के बाद आते हैं, तो उनकी ऑर्गेनिक इफेक्ट और उनकी जो विटलिटी है थोड़ी सी लो हो चुकी होती है। तो उस केस में आप 30 पोटेंसी को ही सेफ समझ कर दो, सो दैट देयर शुड बी नो एग्रावेशन एट लास्ट। और हाई पोटेंसी देने के बाद में सम टाइम देर आर चांसेस कि एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। वो एडवर्स क्या है कि पेशेंट के लिए नहीं है, पेशेंट के लिए तो लोकल कंप्लेंट एग्रावेट करेगी, पर लेकिन हमारे लिए ये है कि दैट इज ए गुड साइन, नो डाउट, कि लोकल कंप्लेंट एग्रावेट करती है और इन जनरल पेशेंट फील बेटर। पर लेकिन पेशेंट इन चीज़ों को नहीं समझने को तैयार है। तो अल्टीमेटली हम ये बात समझते हैं कि कैंसर के पेशेंट को जब वो 4th स्टेज में है, एडवांस स्टेज में है, जब वो बेड रिडन है और ऐसी स्टेज में आता है, तो उसको वो ग्रेजुअल रिलीफ जो है वो मिलता रहे। और वो ग्रेजुअल रिलीफ में हम मेडिसिन को भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे हनीमैन साहब ने भी ये बात कही हुई है कि जब आपको क्योर नहीं मिल रही है तो टेम्परेरी रिलीफ भी आप दे सकते हैं पेशेंट को। तो कम से कम समथिंग इज देयर, तो उस टेम्परेरी रिलीफ देने के लिए हमको मॉडरेट पोटेंसी और लो पोटेंसी ही देनी चाहिए। ठीक है सर। सर एक डॉक्टर नीतू अरोड़ा है, उनका क्वेश्चन आया है, कैन वी ओनली डिपेंड ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन इन कैंसर केसेस? कैन वी डिपेंड? कैन वी ओनली डिपेंड ऑन होम्योपैथिक मेडिसिन? यस, वन थिंग इज देयर। जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पास पहली स्टेज में केस आते हैं जहाँ पर अभी अनडायग्नोज केस ही हैं, जहाँ डायग्नोज भी हो चुके हैं, पर लेकिन अभी उनमें कीमोथेरेपी नहीं हुई है, रेडिएशन नहीं हुई है, सर्जरी नहीं हुई है, चलो पेशेंट ने थोड़ी सी एलोपैथी दवाई खाई हुई है, तो ऐसे केसेस में अगर वो केस आते हैं और उनको अगर हम होम्योपैथिकली देते हैं मेडिसिन, तो वेरी गुड रिजल्ट ही देयर। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने पेशेंट आते हैं कैंसर के नाम पर, देयर इज 2 टाइप ऑफ फियर, कि एक तो ये कि ठीक होगा कि नहीं होगा, दूसरा ये है कि उनके सराउंडिंग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, उनके रिलेटिव जो हैं, वो उसको बैठने नहीं देते हैं, कंटिन्यू करने नहीं देते हैं मेडिसिन को, और वो उनको कन्विंस करते हैं कि आप कहाँ फंस गए हो होम्योपैथी में और आप जंप कर जाओ एलोपैथी में। तो इस ढंग से वो हमारे पास टिकते नहीं है। पर लेकिन जो भी पेशेंट पेशेंसली टिकता है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो ठीक भी होता है और ही इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द होम्योपैथी एंड दे हैव गॉट द रिजल्ट आल्सो। थैंक यू सर। रिदिमा, हेलो रिदिमा। जी मैम, गुड रिदिमा मॉर्निंग। आप अपना सवाल खुद पूछिए, 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपकी तरफ से। मैम मैंने एक तो ये पूछना था। सर से हाँ जी, पूछिए। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने पूछना था कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स ना हो, तो उसके लिए हम क्या मेडिसिन उनको कह सकते हैं लेने के लिए? क्या रेडिएशन ले रहे हैं? जी, वो चाहते हैं कि मतलब आफ्टर इफेक्ट्स ना हो, तो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी है जो उसके नहीं, आफ्टर वो हाँ इफेक्ट्स? वो तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। रेडियम के साइड इफेक्ट को चेक करने के लिए रेडियम ब्रोमाइड ही आप साथ में दे सकते हो, वोमिटिंग चेक करने के लिए। इपिका दे सकते हो वोमिटिंग को चेक करने के लिए। जनरली रेडिएशन देने के टाइम में वोमिटिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा आती है
और इसके लिए तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी है, वो पर्टिकुलरली हर पेशेंट को ईपी का देता है टू चेक द बम्पटिंग। दीदी में और भी क्वेश्चन है कोई आपका? यस मैम, एक कार्सिनोसिन को लेके है मैम। सर कार्सिनोसिन हम कब यूज कर सकते हैं और उसकी देखिए रेपिटेशन कैसे कर कार्सिनोसिन सकते की एक आप ना बोरिक में एक फर्स्ट लाइन पढ़ी है कार्सिनोसिन की, कि मैंने भी यहाँ भी इसमें भी मेंशन किया था स्लाइड में भी, कि व्हेन देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोसिन देन वी कैन प्रिस्क्राइब द कार्सिनोसिन। जब पेशेंट, ये जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है और हमारे को डायरेक्ट कैंसर हुआ है या मुझे पहले कैंसर हुआ है, मैं ही फर्स्ट आदमी हूँ, तो ऐसे केसेस के लिए कार्सिनोम जो है वो स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनती है उनकी, पर नो डाउट कि हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए उसको दे सकते हैं एज ए स्पेसिफिक मेडिसिन। पर लेकिन जहाँ फैमिली हिस्ट्री है और पेशेंट लैंग्वेज लिखी हुई है बोरिक में कि पेशेंट टॉक्स अबाउट द फैमिली हिस्ट्री और टॉक्स अबाउट द कैंसर, कि आई मे सफर फ्रॉम द कैंसर, हैविंग डाउट इन लाइक दैट वे, देन यू विल थिंक ऑफ कार्सिनोसिन। And sir, its potency and repetition. हाँ, जब 200 बेड टाइम वीकली और फोर्टनाइटली। Thank you sir. एंड डॉक्टर हर्षदीप? यस मैम। हाँ जी बेटा, अपने क्लास की आपके भी 3-4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आई हैव वन डाउट कि आपने बोला है कि आर्सेनिक एंड हाइड्रास्टिस हम जनरल मेडिसिन में दे देते हैं टू इंक्रीज विटालिटी, तो उनमें हम दोनों कंटिन्यू करेंगे कि ईदर वन ऑफ दोस? बेसिकली बेटे मेरा जो कहने का मीनिंग है वो ये है कि दोनों तरफ से करने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम वर्क जो है ना, फंक्शन जो है कौन से ऑर्गन का है, वो लिवर का है, जो हमारी जीआईटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जीआईटी सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा, डाइजेशन ठीक होगी और हम जो प्रॉपरली खाएंगे वो हजम होता रहेगा, तो हमारी बॉडी सर्कुलेशन में सब कुछ ठीक रहता है, सिस्टम सारे ठीक रहते हैं। खाने पीने के बाद ही सिस्टम ठीक होते हैं। आदमी की विटलिटी खाने पीने के बाद ही बनती है, अकेला बूस्टअप करने से नहीं बनती है। हम अकेला किसी को कहते रहे, हल्लाशेरी देते रहे कि आप बहुत तगड़े हो बहुत तगड़े हो, वो तगड़ा नहीं बनेगा जब तक उसको खाने को कुछ नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आर्सेनिक जो है वो बूस्टिंग मेडिसिन है आदमी की विटलिटी के लिए, और हाइड्रास्टिस जो बूस्टिंग मेडिसिन है उसके सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, उसके रेगुलेटरी को, सिस्टम के खाने पीने का हर चीज को, ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस ढंग से आप दोनों मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रास्टिस इन लो पोटेंसी एंड आर्सेनिकम इन पोटेंसी। हाँ जी। डॉक्टर गुनीत पाल प्लीज पूछिए सर। सर एक मैम वन मोर क्वेश्चन था। श्योर बेटा। सर जैसे हमने मतलब बहुत बार ये भी सुना है कि आर्सेनिक एल्बम अगर हम लो पोटेंसी में देते हैं तो उनकी पैलिएशन की जगह पीसफुल डेथ हो जाती है, तो नहीं, लो पोटेंसी का मतलब आप 30 पोटेंसी को लेते हो या 1x को लेते हो? नहीं सर 30 या फिर 30 6। जो मॉडरेट 30 पोटेंसी जो है दैट नेवर कॉजेज डेथ। ओके ओके सर, दैट इज अ डायनामिक डोज। ओके थैंक यू सर। डॉक्टर गुनीत प्लीज। डॉक्टर गुनीत पाल। डॉक्टर नीतू अरोड़ा। नीतू सामने आइए बेटा। डॉक्टर प्रवीण आप अपनी सवाल पूछ लीजिए। अपने माइक अनम्यूट कीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज। एक्चुअली हाँ जी सत श्री अकाल सर। या सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, मैं पुछना सी मोस्टली जिस तरह मेरे को डिस्पेंसरी च पेशेंट्स आंदे हैं ना, तो आके अपने आप ही दसदे हैं कि सानू कार्सिनोसिन 1M बोलिया कि 6 महीने बाद एक डोज ले लिया करो इफ यू आर हैविंग हिस्ट्री ऑफ कैंसर। या सर वो लेनी ठीक है कि नहीं, मतलब जिस तरह पेशेंट्स 6 महीने बाद भी अगर फैमिली हिस्ट्री तो ले लेंदे आके, मेरे को क्वेश्चन आके ही पूछने। when you are saying 1M potency and after 6 months, that is comparatively sufficiently long period. When we are giving 200 potency weekly or fortnightly, so I compared it to that, 1M is still better if we are giving after 6 months or 1 year. So in that condition, we can think of this way
कि arsenic carcinosin can be given to the person, but basically once if we have given, then there is no need of repeating the dose. ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਸੀਨੋਸਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ. No, no, but that should not be repeated so frequently. So every ठीक है, time. Dr. Gayatri. Yes, good morning to all. Good morning to all. Good morning. Sir, my father is suffering from CKD and he is also on dialysis. But वो क्या होता है कि डाइजेशन नहीं होती है तो एलोपैथिक में वो लोग इंजाइम्स वगैरह देते हैं खाने के पहले, खाने के बाद डाइजेशन के लिए. तो सर वहाँ पे क्या हम आर्सेनिक एल्बम 30 और वो हाइड्रोसिस स्कैन दे सकते हैं उनको कि डाइजेशन उनका बेटर रहे? नहीं, वो मेडिसिन हमारी जो आर्सेनिक है वो उसके लिए नहीं है, जी डाइजेशन के लिए नहीं है. हमारी मेडिसिन तो बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए है. जी. So when the system will be normal, everything will be okay. He or she can take the things, she can eat the things. ओके नहीं, बट सर उनके डाइजेशन सही नहीं रहती So ना. नहीं, in that case, as the enzyme when we are giving to the person, enzyme क्या है? बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए है ना कि वो जो खाए वो हजम हो जाए. जी. तो उसी ढंग से we are boosting the body. ओके, मींस होम्योपैथिक में ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते हैं कि उनके नौजिया नहीं, और डाइजेशन को कुछ ठीक कर रखे? नहीं, उसको होम्योपैथी में वी कैन गिव, उसके लिए मेडिसिन और हैं. वो नक्स है जैसे हमारे लिए, तो हम नक्स को रात को देते रहें रोज अगर, तो पेशेंट का डाइजेशन ठीक रहता है. 30 में या 30 में एट बेड टाइम यू विल गिव डेली डोज. आपके फादर को क्रॉनिक किडनी है ना फेलियर? यस यस यस. फॉर दैट पर्पज नो, इफ ही हैविंग द अदर प्रॉब्लम आल्सो, so then give accordingly medicine. Okay. उनके लिस्ट में मेडिसिन सिलेक्ट कीजिए, ऐसे मत प्रोब कीजिए. Don't think of that specific medicine for that way. जी जी. ओके ओके. देखो उनका, देखो कि वो सिम्टम कहाँ से आ रहा है, उस वजह से वो मेडिसिन आपको सिलेक्ट करनी होगी. That is basically due to hemodialysis. ओके ओके, थैंक यू. डॉक्टर एम ने हाथ रेज करा है. डॉक्टर एम प्लीज पूछिए. Yeah, good morning everyone. I wanted to Yeah. find out, sir, could you highlight certain remedies for leukemias? Leukemia. There is one medicine, X-ray. So you can prescribe that medicine, X-ray for 1 m for leukemia. So for all leukemias, chronic and as well as AML, No, is not for all. CLL? Basically, what we are, the symptom we have in case of leukemia, no, there is destruction of the RBC, WBC, all the things are there. So in that condition, X-ray is the one of the specific medicine for that condition. So you can control that way. Thank you, sir. डॉक्टर गुनीत पाल. ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ 78 ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਰਸੀਨੋਸਿਨ. ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨਫੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਸੀਨੋਸਿਨ 1 m ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਸੀਨੋਸਿਨ 1 m ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 200 ਦਿਓ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 200 ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ 1 m ਤੋਂ सीधा? हाँ, नहीं आप आ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है. So you can reduce the medicine. ਤੇ 200 हर महीने दे सकते हैं? हाँ, महीने बाद देते रहो. अच्छा, महीने बाद देते रहो. Along with the indicated medicine. Which side, right side or left side? Right side. Breast cancer right side. हाँ जी, right side है. So accordingly you will prescribe the medicine also. Okay. Indicated medicine. हाँ जी. Ciprinum is there and other medicines are there. Okay. तो सर मेरा और एक क्वेश्चन ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 m ਦੇਨੇ ਆ ਕੋਈ 900 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ LM ਪੋਟੈਂਸੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? नहीं, ये ਤੁਸੀਂ LM पोटेंसी कम करना फिर तो नो प्रॉब्लम. LM पोटेंसी ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So you can repeat the medicine LM पोटेंसी. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 900 ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ LM? नहीं, any NSAID or any medicine when you are giving in LM potency, so you can repeat the medicine, no problem. Okay sir, thank you sir. Okay. आलम बख्शी, आपका सवाल है, प्लीज पूछिए. आलम.
गुड हाँ मॉर्निंग जी पूछिए। जी। हम ये कार्सिनोनियम जो है, अगर कंफर्म है कोई पेशेंट कैंसर में, किसी भी कैंसर में, तो हम ये Right. सीएम या एलएम में दे सकते हैं ये carcinogen. कार्सिनोनियम? No, any medicine you can give to the LM potency when that is indicated. सीएम potency. In CM potency. Yeah. No, you cannot give the higher potency at the same time, no, because the part is affected, pathological changes are there. So it is better you avoid this medicine. Okay. Thank you. Okay. हर्ष पूछिए बेटा अपना, हर्षदीप। यस मैम। मैम हम जैसे सर जैसे हम इसको ट्रीट करते हैं तो मतलब आइडियली हमें कितना टाइम मेडिसिन देनी पड़ती है कि आगे हम फर्दर चेकअप करवाएं, या प्रोग्नोसिस कितने टाइम में हमारा रहता है? नहीं, चेकअप के लिए तो every 3 months you can go for. ओके। वो तो पेशेंट पर डिपेंड करता है ना कि how much he can spend. हाँ जी। And how much he feeling better, no. Along accordingly you can advise. ओके नवजोत बाबा, डॉक्टर नवजोत बाबा प्लीज पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी के टीबी एंड कैंसर है, तो इफ वी हैव टू गिव अ एंटीमियास्मेटिक रेमेडी, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज की है वो वर्क नहीं कर रही है, एंड वी आर श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज ओके, एंड when the well selected medicine fails, you know, yes sir, keep in mind one thing is there, when well selected medicine is failed, either we are wrong or the patient is not taking the proper medicine. ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम उनको फैमिली हिस्ट्री के बेस पे, जैसे टीबी एंड कैंसर है, तो उसको हम दे सकते हैं कितना you can डिफरेंस prescribe even tuberculinum also. ओके सर, जैसे problem. कार्सिनोसिन फर्स्ट हमने दी 1 एम में सिंगल डोज, एंड आफ्टर अ वीक वी कैन रिपीट ट्यूबरक्लिनम 1 एम? No. At least 15 days. Okay, after 15 days. That is the safest period. Okay sir, okay, thank you so much. Okay. एक और हाथ रेज हुआ है, प्रदीप पूछिए बेटा। डॉक्टर प्रदीप। सर थैंक यू मैम। सर मेरा ये सवाल था कि सार्कोड आपने कभी यूज किए हैं, या सार्कोड का कोई रोल है कैंसर में? किसमें? सार्कोड Yeah. In case of lung condition. in any cancer. Screenum medicine or which medicine? Sarcodes. Sarco I have not used. Okay. That may be a specific condition. गायत्री, आपका कोई सवाल है? यस, वन कंफ्यूजन सर, यहाँ पे दो बातें हुई। एक तो जो सफर कर रहा है पेशेंट कैंसर से या टीबी से, दूसरा कि जिसके फैमिली हिस्ट्री में मदर को हो या मतलब नानी को हो, जो ग्रैंड मदर को, तो हम ऐसे बच्चों को, मान लीजिए कि मेरी मदर को रहा हो या ग्रैंड मदर को, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक डोज ट्यूबरक्लिनम 1 एम या कार्सिनम 1 एक डोज ले लेना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? Yes, you can take the specific medicine, that is botulinum, as a precautionary measure. ओके सर। और जो सफर कर रहा है उस बंदे को 200 या जो सफर कर रहा है उसकी तो ट्रीटमेंट है ही है जी, विथ फोर्टनाइट तो इलाज करेंगे जी, विथ मतलब 200 फोर्टनाइट या 1 एम 6 मंथ्स। उसका पॉइंट नहीं है, उसका तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव प्रिस्क्राइब्ड द मेडिसिन। ओके, और जिसके मतलब फैमिली हिस्ट्री में उस बंदे को ले लेना चाहिए एक बार। वो बोtulinum 200 ले सकते हैं, botulinum 1 एम ले सकते हैं। ओनली 1 डोज ना? वन डोज, दैट इज सफिशिएंट नो? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? चलो, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप जरूर बोलिए, आपका सीनियर डॉक्टर हैं, आपका तो एक्सपीरियंस है।
डॉक्टर सोलंकी। हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा तो कैंसर के पेशेंट ट्रीट नहीं किए, लेकिन जितने भी आए सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से ये हुआ है। तो सबसे पहले एक केस मेरे पास आया था, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 20 साल हो गए ये बात को। तो एक CML का केस था जो हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दिए कि जैसे ये मरने वाली है और तुम लेके जाओ, और उसको हर जैसे 3rd डे या 4th डे ट्रांसफ्यूजन लगता था। तो पेन तो बहुत थी, और मेरे पास रिलेटिव आ गए, डॉक्टर साहब तुम अगर कुछ कर सकते हो, हमें पता है ये मरने वाली है, लेकिन अगर कुछ कर सकते हो तो हम देख नहीं सकते इसके जो पेन्स है या ये है। तो मुझे तो मैंने रिपोर्ट्स देखी, इतनी बड़ी बड़े हॉस्पिटल से आए, तो मैं बोला कि मैं क्या करूंगा। वो बोले कि ठीक है, पेन के लिए मैं कुछ ना कुछ दे सकता हूँ। तो मैंने देख लिया और कुछ समझ में नहीं आया। CML का केस था, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का। और जो मैंने ऑब्जर्व किया पूरे केस के अंदर, एक जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी थी। जनरलाइज पूरे लिम्फ नोड पूरे बॉडी के ऊपर, और पेनफुल थे वही पे। तो उस केस में वो एक ही मैंने देख लिया और उसके ऊपर लेडम पाल प्रिस्क्राइब किया था। So that is a good medicine for that पाल condition. से हुआ क्या कि इमेजिन नहीं करोगे सर, विदिन 7 डेज जो औरत को उठा के लाए थे वो औरत खुद चल के आ गई थी। और उसके That's बाद में good. उसके बाद 5 years तक वो जिंदा रही। बेसिकली ऐसे होता है बहुत बार कि बहुत से पेशेंट जो होते हैं ना, पहले वो डिमांड करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बस 2 महीने बच जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में वो जब ठीक हो जाते हैं तो सोचते हैं और लाइफ मिलती रहे। हाँ सही से, बिल्कुल सर। तो वो डिमांड बढ़ती जाती है फिर। ये केस है। और जो दूसरी केस थी ना सर, मेरे चाचा की है, उनको लंग कैंसर हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कभी हॉस्पिटल बताए नहीं, तो एक्चुअली उनकी डेथ हो गई। आर्सेनिक यूज की थी उसमें, लेकिन उसकी डेथ इतनी, मतलब उनको कुछ भी पेन नहीं हुआ, हंसते हंसते बात करते करते ये दैट हो वाज गए। पेनलेस डेथ। हाँ जी। सर लेडम पाल की क्या पोटेंसी दी थी आपने? इन मेडिसिन, विच मेडिसिन? लीडम फाल की सर ने बोला ना, उस फीमेल को हाँ, दिया था जो 1 सप्ताह में चलने के आगे, तो लीडम फाल दिया था ना, उसका पोटेंसी क्या दिया? वो 30 पोटेंसी में। रिपीटेड डोज ना? हाँ, रिपीट करनी पड़ेगी। एक तो पैथोलॉजी थी जी और पोटेंसी, मिड पोटेंसी सिलेक्ट की थी। जी जी दैट इज द सेफ पोटेंसी, नो? जी मींस 3 टाइम्स पर DDS दिया हाँ, हमने? TDS यू कैन प्रिस्क्राइब। जी थैंक यू। ओके। Hello everyone. Thank you everyone. Hello. Okay, thank you very much. Hello. हाँ जी योगेश। हाँ जी, इन द एंड एक और छोटा सा शेयर करता हूँ सर, एक मिनट में। प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मेरे फादर वेरी क्लोज फ्रेंड, और अर्ली डेज जब यंग डेज में थे, तो एक केस मुझे उन्होंने सुनाया था। मेरे पापा की क्लिनिक के साइड पर ही एक ओल्ड लेडी थे सफरिंग फ्रॉम कैंसर, और रात भर शी वाज क्राइंग विद द पेन। तो सर ने और पापा ने डिस्कस करके उसको कुछ मेडिसिन दी थी। तो अगले दिन सभी आसपास वाले उनके घर आ गए, उनको लगा शायद माता जी की डेथ हो गई है। और बट उस मेडिसिन ने उनको पेन को इतना हेल्प किया, और उसके बाद वो 4 साल तक रहे। एंड दिस इज द पावर of homeopathy. Along with that, the simple application जो आप सर कह रहे हैं, that is very important. Sometimes we just lost in the theories and everything, but forget the very basic things. तो ये केस था जो मैं शेयर करना चाहता था। Thank you sir. Okay, thank you. Thank you. Bye bye everyone. हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट मंथ के लिए मैं बोल दूं कि मदर्स डे पे हम फिर से एक
नया आइडिया लेके। टिल देन बाय बाय।